तो सबसे पहले आप में से वो लोग जिन्होंने कभी भी कुरान को खोल के नहीं पढ़ा है, आपने सूरह काफ को कभी भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चाबी देना चाहता हूं कुरान की। कुरान की बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन उसमें से एक चाबी मैं आपको देना चाहता हूं कि जब खुदावन ताला कुरान के अंदर कोई बात करते करते अचानक से छोड़ दे, तो आप समझ लेना कि यहां पर कोई राज छुपाया गया है। इफ यू are reading the Quran and you see a flow of talk, ayat, but all of a sudden the story or the talk stops and Allah changes the subject, changes the topic, then you should pay attention to that junction. There is a secret hidden at that point. So let me take you into Surah Kahf, Surah number 18. And remember, we were reading the ayat of Hazrat Musa. Up until what point? Up until 82. All of a sudden, Allah changes the topic. We don't know what happened to Musa after that. What happened to Zulqarnan, I'm sorry, the Khizr after that? And what happened to the companion of Musa after that? Because all of a sudden, you notice the topic changed. तो कौन सी चाबी होनी चाहिए हमारे पास कि जब भी ऐसा आप देखें ना, तो आप समझ जाना कि खुदावन ताला यहां पर सर अजीज सर, आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई है सर। they will be able to open the doors to the batin and the understanding of the Quran. Okay, so now let's come to our next subject, and we will see and learn about Zulqarnain. आप में से कितने लोग हैं जिसने जुल्करनैन का नाम सुना है पहले कभी भी? Raise your hand if you have heard of Zulqarnain. आपने जुल्करनैन का नाम सुना है पहले कभी भी? Not very many. Okay. सूरह कहफ के अंदर खुदावन ताला मूसा के किस्से के बाद और खिजर के किस्से के बाद जुल्करनैन का किस्सा सुनाता है। इसके नाम को आप सुन लें, जुल्करनैन, 2 वर्ड से एक नाम बना है। जुल्करनैन का मतलब होता है the one with the 2 horn, 2 सिंगा जिसको कहते हैं हम उर्दू के अंदर, 2 सिंगा, 2 हॉर्न, कि जब उसको ब्लो करें तो उसके 2 तरफ छेद होते हैं and it makes a funny sound, and funny meaning it comes out from the 2 sides. 2 तरफ से उसकी आवाज निकलती है। In the old time, the people would use this instrument to call people from the town and the cities far away. So they will blow on that. हमने अपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जब बादशाह आता है या कोई जंग का अनाउंसमेंट करना होता है
तो वो ब्लो करते हैं, टिन 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 टिन, that sound. In the old time, when we did not have a trumpet and bugle, so they would use this instrument called Zulqarnan, the one with the two horn. Okay, ये तो सिर्फ नाम की तशरीह थी. तो खुदावंद ताला पहले कुरान के अंदर आयत नंबर 83 से लेकर 100 तक 17 आयतें हैं सूरह काफ के अंदर. तो let me go ahead and tell you the story first, और इसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. स्टोरी इस तरह से है कि एक दिन जुल्करनैन एक सफर पर निकला, और खुदावंद ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन को मैंने बहुत ज्यादा इल्म और बहुत ज्यादा ताकत दी हुई थी. अब चाबियों को, कुलियात को समझते हैं, तो आप समझ गए कि जुल्करनैन कौन था, कि खुदा ने उसको बहुत सारा इल्म और बहुत ज्यादा ताकत दी हुई थी. तो जुल्करनैन कौन होगा आप समझ गए. जुल्करनैन एक दिन सफर पे निकलता है और एक जगह पर वो देखता है कि कीचड़ है, यानी कि पानी और मट्टी का एक जखीरा है. कीचड़, मड, अ बॉडी ऑफ मड. और उस कीचड़ में से सूरज तुलू और गुरूब हो रहा है. And within that mud, or the body of mud, the sun is rising and sun is setting in that kitchen. What did I tell you? If it does not make logic, does this make any logic to you? कि किसी कीचड़ में से सूरज निकलता हो और सूरज डूबता हो, तो इसका क्या मतलब होगा? इसके अंदर एक तावील छुपी हुई है. फिर जुल्करनैन आगे जाता है और एक गांव के करीब रुकता है, और गांव के लोग कहते हैं कि या जुल्करनैन, हमारे गांव के दूसरी तरफ जो लोग रहते हैं वो बहुत ही शर करते हैं, यानी कि बहुत ही हंगामा करते हैं. सो वुड यू प्लीज हमारे और उसके दरमियान में एक दीवार बना के दो हमको, ताकि वो लोग हमारे गांव में ना आए और हमको तंग ना करें. So they may not come into our side and bother us. Would you build us a wall? Zulqarnain कहता है, of course, I will build us such a wall that they will never be able to cross. But for that, I need your help. लोग कहते हैं कि हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा माल देंगे, अगर आप हमको दीवार बना के देंगे तो. जुल्करनैन कहता है कि खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है. किसके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ होता है? What was the principle? Only one person who has everything that God has. जुल्करनैन कहता है मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है. I am वकुल शहीन. देखा आपने? Keys, कुलियात, चाबियां. Do not forget your keys. तो वो लोग कहते हैं फिर हम क्या करें आपके लिए? जुल्करनैन कहता है आप एक आग जलाएं और उसको धोंके. धोंके किसको कहते हैं बताए? अगर आप इंडो पाक से हैं, पुरानी कंट्री से हैं, हमारे वहां एक कली वाला बैठता था जो बर्तनों को कली करता था, और उसके वो आग जलाता था. उसके पास एक आला होता था, यूं यूं करके उससे फूंक मारता था. वो उसको धोंकना कहते हैं. आग को भड़काने के लिए वो हवा जो मारते हैं ना, उसको धोंकना कहते हैं. I'm sure you guys been here in America for such a long time. Some of you may not remember those old
fashion way of shining our dishes, जिसको हम कली कहते थे, कली करते थे. Anyway, तो उन्होंने कहा कि आप एक आग जलाएं और उसको धोंके, खूब धोंके, और मैं तुम्हारी उस आग को लेकर एक ऐसी मेटल की दीवार बनाऊंगा और उस आग को उसके अंदर डाल दूंगा ताकि ये दीवार कभी भी ना टूटे, और वो लोग कभी भी इस दीवार पर चढ़कर तुम्हारी तरफ तुमको तंग करने के लिए नहीं आएंगे. लेकिन जब क़यामत आएंगी तो ये लोग इस दीवार को चाट लेंगे, लिटरली इस दीवार को खा जाएंगे. इस कौम का नाम था याजूज व माजूज, गोग व मगोग. किसने सुना है याजूज व माजूज का नाम? Anyone? Any hands? Only one? Only two? Three? Okay. याजूज और माजूज कहते हैं कि इस कौम का नाम जो था वो याजूज और माजूज था, गोग एंड मगोग. Anyway, Zulqarnain starts to build the wall, और उस गांव के जो लोग थे वो एक आग को जलाकर उसको धोंकते हैं, और जुल्करनैन उस दीवार को खड़ी कर देता है विद गारंटीड, मनी बैक गारंटीड, कि क़यामत तक इस दीवार को नहीं तोड़ सकेंगे. एंड दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दिस वॉल, दे विल नॉट बी एबल टू पुट देयर एंकर ऑन द टॉप ऑफ दिस वॉल. और जुल्करनैन आगे बढ़ जाता है. अब अगर हम इस स्टोरी को सिर्फ स्टोरी लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर फिनिश कर लेता हूं और ये सेशन खत्म हो जाता है, तो मुझे बताएं आपको क्या फायदा इस स्टोरी से? आपको कुछ भी फायदा हुआ ये स्टोरी सुनकर? अभी कुछ भी फायदा नहीं हुआ. तो कुरान के अंदर एक ऐसी स्टोरी खुदावंद ताला बयान करे जिससे हमें कोई फायदा ना हो. Is that possible? When the Quran is the book of Talim, the knowledge, and Hidayat, the guidance. Actually, remember the story of the Mu'min Salik? The one we were taking the journey with Khizr? Actually, story never finished. Khuda ne gulati mari. He changed the topic on us. So those who have no knowledge, no understanding of batin will go away, will be lost. But others who has the understanding of the batin, have the keys of the Quran, have the knowledge of the Imam, will see that Allah has changed the topic, so no one can see what He is telling us. But only those, only few of those who has the keys to the Quran. Kaleedein, yaad rakh lein, kaleedein, chabiyan, must. Without the key, you will not be able to open the door to the understanding and the ta'wil of the Quran. So now let me tell you the same story. आपरी आसान जबान में, गुजराती में तमने समझाऊं हवे. आसान जबान में. What does it mean, आसान जबान में? The language that we would understand. Then Mu'min Salik, when he went on that spiritual journey, जब वो बंदा अपनी रूहानी जर्नी पे गया था ना, तो पहले वो अपनी इस आंखों से और अपनी इस आंखों से इमाम के एक माजिज़ को देखता है. और क्या देखता है कि इमाम उसके गुरूर को तोड़ता है, उसके नफ्स अमारा को मारता है
और उसके लिए उसके खजाने की तरफ इशारा करता है। अब यही मोमिन की जर्नी, पे अटेंशन टू दिस वन, यही मोमिन की जर्नी जो मोमिन ने अपनी आंखों से अपने बातिन में देखी थी, अगर यही जर्नी को इमाम अपनी आंखों से देखता तो क्या देखता? Let me let you think for a second, because what I'm about to tell you, it should trip you over from your chairs, आपके माइंड को ब्लो कर देगा। एक जर्नी जो मोमिन अपनी आंखों से देखा था, अगर इमाम उस जर्नी को देखता तो वो किस तरह से बयान करता कुरान के अंदर? The story of the Mu'min continues, but this time with the eyes of the Imam. इमाम देखता है कि एक बंदा जो मट्टी की मिसाल पर है, the Mu'min is an example of the dirt, and when he is given the knowledge, the water, so when you take the dust and the water, what do you get? Mud. तो इमाम आपके अंदर का एक सफर करता है। किसके साथ सफर करता होगा? आप बोले मेरे को। आप ही के साथ सफर कर रहा होगा ना। नाम बदल दिया, पहले उसका नाम खिजर था, अभी जुल्करनैन है। देखा इमाम कैसे पर्दे में काम करता है। अब इमाम आपको आप ही की स्टोरी सुना रहा है, आप ही की रूहानियत की स्टोरी सुना रहा है आपको। और क्या देखता है मौला? एक मोमिन मट्टी को, और मोमिन जिसके पास इल्म है कीचड़ को, क्योंकि इल्म, पानी और मट्टी, मोमिन जब मिलते हैं तो उसकी मिसाल, एग्जाम्पल, वो कीचड़ की होती है, मड की होती है। और क्या फरमाया? याद है हमको एक इलॉजिकल बात, कि उस मड में से सूरज डूब रहा था और उग रहा था। The sun was shining and sun was rising and sun was setting in that mud. Remember मैंने क्या कहा था? अगर कोई बात लॉजिक नहीं बनावे तो उसके पीछे बातीन तावील छुपी हुई है। इमाम आपके अंदर जो अब इल्म और मोमिन का मिलाप है, उसके अंदर से अपना नूर उगता हुआ और डूबता हुआ देखते हैं। He sees the nur in you, rising from you and setting in you. इमाम का नूर मोमिन से उजागर होता है और मोमिन के अंदर आकर गुरूब हो जाता है। इमाम का नूर आपके अंदर से इंशाअल्लाह एक दिन दुनिया के ऊपर जाहिर होगा। आप इमाम की वो कॉपी है कि जहां से इमाम के नूर का रिफ्लेक्शन, मैनिफेस्टेशन होने वाला है। अगर आप उस लेवल के मोमिन है तो इमाम आपके आलम शख्सी, in your personal world, when he take that journey with you, then he sees his nur setting in you and his nur rising from you. Then Imam goes further. और कहां पहुंचता है? एक गांव के किनारे पर। और वहां पर कुछ लोग होते हैं और कहते हैं कि या जुल्करनैन, तुम हमारे लिए एक दीवार खड़ी कर दो।
Please pay attention to this. जब आप अपनी उस रूहानियत के मकाम पर पहुंचेंगे, when you will reach to that such a level of रूहानियत, your zahir and batin will become one. But how do you live with your batin open all the time? Question to yourself, ask yourself, अगर आपको बातिन की सारी चीजें नजर आने लगे, सारी रूहें नजर आने लगे, सारा कायनात, जन्नत और खुदावन ताला की हर चीज नजर आने लगेंगी, तो आप दुनिया में जी पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. So you are requesting the Imam, Ya Zulqarnain, please build a wall for us. और ये याजूज और माजूज जो थे ना, वो दुनिया भर की रूहें और कायनात भर के फरिश्ते थे. जो दीवार हट जाने की वजह से, जाहिर और बातिन के दरमियान में जो दीवार है ना, वो हट जाने की वजह से वो आपकी तरफ आ रहे थे. तो आप उसको कहते हैं, यानी कि इमाम को, कि प्लीज build a wall between my zahir and batin so I can live in this world. बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है my friends. अब इमाम की हिकमत को देखें. And I'm going to give you some specific, very specific examples. Please catch, because I may not be able to repeat. As Zulqarnain says in this story, in this Quranic event, he says, I have everything, I don't need anything from you, but build a fire and blow, usko donko, usko barkao, and I will build a metal wall with that fire. ये फायर जो था, वो आपके इसमें आजम और इमाम के इश्क का आग थी वो. और उसके जो धोंकना था ना, वो आपके इसमें आजम को जोर जोर से पढ़ना था, कि जोर जोर से अपने इसमें आजम को पढ़ो कि मेरे इश्क की आग तुम्हें भड़क जाए, और उसी इश्क की आग से मैं तुम्हारे जाहिर और बातिन के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. कोई सवाल पूछ सकता है कि इस दीवार को खड़ी करने में कितना वक्त लगा होगा? इस दीवार को खड़ी करने में 180 घंटे लगे थे. 7 days and 8 nights. Why did Imam take such a long time to build a wall? Could he not just say kun और दीवार खड़ी हो जाती? वो तो कुन फयकुन का मालिक है. नहीं, इमाम की इस अमल में बहुत बड़ी हिकमत है. वो आपको फना फी इमाम करना चाहता है मुकम्मल तौर पर. और ये रूहानी जर्नी कितने घंटों की थी, वो नाचीज व गरीब आपको समझाना चाहता है. इस रूहानी जर्नी में जब को मोमिन सालिक चलता है और उस मकाम पर पहुंचता है, तो उस मकाम से उस मकाम तक जहां पर इमाम इस दीवार को खड़ी करता है, उसके दरमियान में 7 days and 8 nights. आप कैलकुलेट करें, आपके पास कैलकुलेशन है तो 7 + 8 15 multiplied by 12 is 180 hours. Why not 181? Why not 179? Why 180 hours? आप जो अमेरिका में रहते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, आपको पता है 360 का क्या मतलब है और 180 का क्या मतलब है. 360 का मतलब है कंप्लीट दायरा. 180 का मतलब है
जाहिर से बातिन की तरफ यू टर्न मारना और बातिन से जाहिर की तरफ यू टर्न मारना। यू टर्न को 180 टर्न बोलते हैं। अगर आपने वो ये टेस्ट कर लिए, वो पढ़ी होगी किताब ड्राइविंग टेस्ट के लिए। Do you see how logical our तरीका is? There is no hocus pocus. Everything is precise. और जब जुल्करनैन वो दीवार खड़ी करता है तो क्या फरमाते हैं कि ये दीवार उस दिन टूट जाएंगी जब क़यामत आ जाएंगी। The day you will die, this wall will be removed so you can enter the batin. अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि इस दीवार के अंदर उसने एक दरवाजा बनाया था ताकि जब जब आपको बातीन से कुछ सीखना हो तो आप उस दरवाजे को खोलें, बातीन से जो देखना है, समझना है, सीखना है उसको हासिल करें और दरवाजा वापस बंद कर दें। और उसका रिमोट कंट्रोल जो है ना, वो आपके हाथ में दे दिया है। नाउ आप बोलेंगे अजीज सर इस रिमोट कंट्रोल का नाम क्या है? कौन सा रिमोट कंट्रोल मौला ने मेरे हाथ में दिया है? उस रिमोट कंट्रोल का नाम है बोल, इसमें आजम, द वर्ड। योर वर्ड इज योर रिमोट कंट्रोल, योर वर्ड इज योर की टू द बातिन। आपने देखा कि जब इमाम ने बार बार हमको कहा कि when and if you read Quran, it must represent a concept to you. But unfortunately, whatever the reason be, due to not understanding the language, due to not paying attention to the Farman, due to not have a good teacher, we have lost so much time. The batin is right in front of us if we pay attention. So let me stop here ताकि हमारे पास कुछ वक्त हो comments and question का। जी। Thank you so much, Aziz sir. It was a beautiful session. You gave lots of knowledge today. So many questions were answered. Sir, there's a request from Rahman Bhai to ask you if you will be available on the 3rd of July to take another session, that is 2 weeks from now. On Saturday evening? Yes. Yes. Okay, thank you. We really appreciate it. Star Alliance and Rahman Bhai and all the participants. It's a very good turnout that we had today. We had 75 links that were on today for your session, and that's a really good number. Anybody else who wishes to have questions can ask so or raise your hand and sir will answer your questions. I see one question in the chat box. Should I read it out to you, sir? Ji, please. What is another tarwil of the story of Zulqarnain, given there are many tarwils? Just like you said, there are many ta'wils. Okay. So it depends on your understanding and your level of knowledge. Then there are multiple ta'wils in the story of Zulqarnain. Zulqarnain is also said to be Hazrat Israfil, and he is the combination of the 4 angels. He is the Sahib-e Qiyamah. He is the Sahib-e Zaman. He is the one who will bring the resurrection, the Qiyamah in the Mu'min. I think that is good enough for your understanding, as I don't know what level this question is coming from. So I would like to stop here. We have one Shirin over here who has raised her hand. If she would like to answer a question, ask a question. Yes, please. Is that Shirin? Yes. Yes. Can I go ahead?
Yale Madad Aziz sir. Molali Madad. MashaAllah, very good explanation about Khizr. I used to always wonder when they sang that Dam Hame Dam Ali Ali, in that paragraph comes that Shahe Shariatam Tuhi, Peer Tarikatam Tuhi, Hak Bahak, no, I forgot. There is a line, Kizre Rahe Khuda Tuhi. I used to always wonder why this is being said, but now I am understanding that Khizr means Imam. Shukr, alhamdulillah. Another question. Yes, go ahead. I have one question. If Yes, everybody- Rashida, you can wait your turn. We Can I still have complete? Shirin going on. After her, you can ask your question. Thank you. Shirin, did you have any question? Yes. When in our dua, we say Kul Uwallah Uwahad, and in Diamond Jubilee Farmans also, Hazrimam was mentioning that you should try to understand why this Kul is said in what context. So here, does the meaning of Chabi also apply? I'm just confused. I'm just asking you. I don't know. Because Kul meaning say. Yes. Say, Allah is one. Kullu Wallahu Ahad. Right? So Yes. again, the Quran, when it says say, who is Allah talking to? Is he talking to Prophet Muhammad? Is he talking to Imam? Or is he talking to the person who's reciting this surah class? Is he talking to the person who's reading and reciting surah class? How and when can you say Kullu Wallahu Ahad? When? If you say, oh well, I say that every day. Actually, Allah, Imam is saying no. First understand how Allah is one. Then say Kullu Wallahu Ahad. Okay. Okay. Yeah. ये इसको कहते हैं इशारों में दावत देनी. He is telling us to understand how Allah is one, and once you understand, then say Kullu Wallahu Ahad. अच्छा. Okay. Okay, अभी मैं पूछ सकती हूँ ना, right? जी. Okay, Aziz sir, मेरा एक question है, and this is not related to, but somehow अपना ये जो अपन नमाज पढ़ते थे, फिर दुआ कौन से इमाम से चालू हुई? I know कि अपने 23rd इमाम में शरीयत हटा ली थी, फिर तरीकत आई थी, right? लेकिन उसके बाद फिर कौन से इमाम से वापस शरीयत वापस आ गई थी ना, एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद कौन से इमाम से दुआ चालू हुई? Peace Din was the first time. I mean, that's I'm just curious. जब तक सब लोग नमाज पढ़ते थे, this is something out. Okay, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये हिस्ट्री देखनी होगी जी भाई. कि हमारे इस्माइली लेस से दो किस्म के थे, एक खोजा जमात और एक अदर जमात. अदर जमात के अंदर पर्शियन, अरबिक, रुशु और ताजिकिस्तान वगैरह के, यानी कि रशिया वगैरह के इस्माइली थे. For those, the dua did not come until 1923. 1923, okay. When Pir Safzali took the dua to them. Oh, okay, 1923. For Khoja Jamaat, हमारे पीर सदरुद्दीन ने हमको गुजराती और फिर पीर शम्स ने हमको सराइकी और सिंधी के अंदर दुआएं दी. Then he changed. Imam Aka Sultan Muhammad Shah, may our soul be sacrificed to the Imam. उन्होंने ये जो अभी हमारे पास दुआ है ना, 1954 में अप्रूव किया. 54 में जी. Then 58 में उसको चेंज किया मौला बापा ने. अल्लाहुम्मा बिहक़. 68 के अंदर दोबारा से चेंज किया 4 मकामात पर. अच्छा. So जब हम दुआ कहते हैं तो दुआ has gone through a period of time in history. जी. For Khoja Jamaat compared to other Jamaat. जी. So Khoja Jamaat, you said 1923. So that time. For the other Jamaat. Yeah, but what Imam was that in that time? Sultan Muhammad Shah.
Sultan Muhammad Shah, right? Because he came in 1800, right? जी. And then Pir Shams and Pir Sadruddin also is in Sultan Muhammad Shah's time, right? नहीं, वो तो नहीं. पहले के है ना, वो तो 600 साल पहले आए थे. जी, I'm sorry, I'm getting there. Okay. तो उस वक्त कौन से इमाम थे, if you don't mind? उस वक्त मेरे ख्याल में शायद इमाम मुस्लिम सिबला के बाद के इमामों का वक्त होगा, क्योंकि इमाम मुस्लिम सेकंड के जमाने में पीर ताजदीन थे जो आखिरी फिजिकल पीर थे. जी. In the time of Imam Muslim Sibillah II, when he sent us, हमको ये पीर पिंदाते जवाब मर्दी भेजी. जी, right. और पीर ताजदीन के डिमाइस के बाद भेजी. जी, right. तो वो उससे पहले के इमामों के फिर. So right. Again, we have to go into the history. I understand. But some people ask, curiosity. So after second Muslim Sibillah, we started saying the dua, this regular. We could say that. Old dua जो पहले पढ़ाती थी ना, 1 घंटे दुआ पढ़ो, whatever it is. Yeah, okay. Very nice you did. And then one, I have heard your, I know in Houston, like Monday and Friday जब आपकी वो होती थी, तब आपने इबादत के बारे में बोला था. And I didn't have your number. I wanted to ask you so badly, but if I can get your number, I will appreciate. If you leave your phone number or the WhatsApp, आपके पास WhatsApp है? जी, बिल्कुल WhatsApp है. तो आप अर्शिया के साथ आपका नंबर छोड़ें. जी. And I will send you the lectures in Urdu or English, whichever you like, on your WhatsApp. Yeah, but on that, on my WhatsApp, but the lecture when you gave and you said, वो मुझे बहुत long time के आपने बोला था कि 1 हफ्ता आप try करना, practice करना इबादत के लिए. Remember you said this, and I'm from Houston by the anyway, ना. And तो उसमें आपने तो जब आपने वो इबादत का भी बोला था, तो when you sit in ibadat, you know how जैसा कि I mean, I wanted to ask you, like, you reply, but I didn't understand. But if you have a time and if you can explain, because it's a different subject, so मैं आपके साथ वो share कर लेता हूँ. That's what. Rashida, your question is good, but it is not pertaining to today's session. And sir has been here for a very long time. Sure, I understand. I totally understand. Do you have one? You can just leave your number in the chat box. Okay, and we will forward you the lectures from Aziz sir. No, okay. I want the number of Aziz sir. So I want to ask you. I want to ask about the ibadat. That is. I will, but if you give me your number, I can give you his number. Sure. I'll put it right now. Thank you. I'll put in the chat box, but please don't forget, okay? No, I have no other way to connect you. So I will. Thank you. Thank you. Take care, Yali Mother. And sorry for taking. Do you have a time for one more question that we have today's subject, or do we want to cut it off and you can continue the next time? We can answer another question, sure. Okay. Where did it go? What is the ta'wil of word Hamim in the Quran as it is told? What is the junction of Hayyul Qayyum? Okay, so again, this line of questioning, because I don't know who's online and who's listening and what level the ilm it is. The junction of Hawa Mim, same Quran, you will find the ta'wil of Hawa Mim as Hal Hayyul Qayyum in 3 different places. In Surah Baqarah, Ayah Kursi 255, Surah Al Imran, Ayat number 2, and Surah Taha, Surah number 20, Ayat number 111. So if you would like to look at those references, it will give you, inshallah, better understanding. For the ta'wil of that, first, of course, we need to increase our level of understanding of the ta'lim, the knowledge and the ilm. And since I do not know what level we have on the friends on this line, I would rather not go into too much detail of this, but I have given you all the references. I believe that was more than enough
You should be able to find that in the Quran. Thank you so much, Aziz sir. Thank you. I really appreciate it. I just want to take this opportunity to thank you and all the participants who have been joined here tonight. It was a wonderful, wonderful session. You have answered all the questions that were pertaining to the subject prior to your earlier session and to this session today too. And we are very thankful to you for taking these sessions and giving out so much of ilm to all the Jamaat. And as you confirmed right now that on the 3rd of July, you will definitely take a session. Let us know the time, whether you want it at 7:30 or 8 p.m. And I'd take this opportunity to thank Aziz sir for being so patient with us, and he's been for a very long time. The session was supposed to be 45 to 50 minutes, but he took the session for 1 hour and 35 minutes, and we really appreciate it. Thank you so much. Thank you for inviting this Garib and Nachis. Thank you for the opportunity. And we had a very good turnover. I mean, like we had. Can you please send me all the? I missed a lot. I just suddenly came and I was so amazed. I was just lost in it all. So I missed a lot. Yeah, it was a very mesmerizing session today. It was like very capturing. My mind is just going crazy. I don't know where to start. So we don't know. I'll ask Aziz sir, and whatever sessions that we have, I will let you all know, and I can forward the links to you either via WhatsApp, or then if I have your email IDs, if you can message me your email IDs on that number. I can give you my email now. Thank you, everyone. Good session, and see you all. Catch you later. Thank you, Yali Madad. Thank you, Yali Madad Rashida. Thank you. Good night, Yali Madad. Ameen, Ameen. Thank you.